Hello and welcome to Business Today Television. I'm Siddharth Zarabi and you're watching Easynomics. The debate on the MSP for farm products continues and talks seem to be deadlocked between the protesting farmers and the Government of India. A formula by the Government of India that proposed 5-year contracts for certain farm produce. That formula seems to have been rejected by the farmers and they continue to press ahead with their original list of demands. And while that negotiation continues and we will perhaps get more updates very shortly, we are going to raise some questions on today's debate, and one of those is the central question of the farmer versus minimum support price. Is this feasible economics and sustainable agriculture, and will it also be smart politics? Because the Government of India seem to have offered a way out, but that doesn't seem to have struck a chord with farmers. And joining me to debate that, Pushpendra Singh, President of the Kisan Shakti Sangh. We are also joined by agriculture expert. He is the editor of agriculture at Business Standard, Sanjeeb Mukherjee. We'll also be joined and getting more voices on the show during the discussion. But let me go to Pushpendra straight off. Pushpendra, there seemed to have been some hope of a breakthrough. A solution was presented by the government, and the hope was that by proposing 5-year contracts for produce other than rice and wheat, including, for example, cotton and pulses on which we are quite import dependent. But that proposal has been rejected. Can you explain why farmers are not willing to consider this offering from the Government of India? देखिए सिद्धार्थ जी, इसमें जो इशू है वो ये है कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग है, हमारा मानना ये है कि जो 23 फसलें हैं, यदि आप उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिक्लेयर होता है C2 प्लस 50% के अनुसार, जो स्वामीनाथन आयोग की भी रिकमेंडेशन थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषणों में बार बार कहा है, और पिछले आंदोलन के बाद भी जो है ये सहमति बनी थी। अब इस मांग के दो पार्ट हैं। एक तो जो एमएसपी डिक्लेयर हो वो C2 प्लस 50% के हिसाब से डिक्लेयर हो। दूसरा पार्ट ये है कि जो भी विलिंगली अपनी मर्जी से मार्केट में आए वो एमएसपी जो डिक्लेयर्ड होगी उससे नीचे नहीं खरीदेगा। हम फोर्सिबली किसी को नहीं कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर या कोई और सेक्टर जबरदस्ती हमारी फसलें खरीदे, लेकिन अगर उसको रिक्वायरमेंट है, वो मार्केट में एंटर करता है विलिंगली, तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये सिंपल मांग। अब इसका गणित सिंपल है बहुत। एमएसपी की जो टोटल 23 फसलें हैं उनका अगर हम इस साल तक का जो है वैल्यू, टोटल वैल्यू वाइज निकालें तो प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय क्या एमएसपी है, उतने रेट पे टोटल फिगर लगभग 14-15 लाख करोड़ रुपए की आती है। उसमें 3 पार्ट्स हैं। एक 1/3 ऑफ द पार्ट इज एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स एट देयर ओन यूसेज। खुद भी कंज्यूम करते हैं एनिमल फीड में, बीज में, आपस में एक्सचेंज करने में, लेबर की पेमेंट में कुछ खराब हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और उसके दौरान, हार्वेस्टिंग के दौरान, तो 5 लाख करोड़ की फसलें इस तरीके से उसमें पहले ही खत्म हो जाती हैं। और जो मार्केट में आती हैं वो लगभग 9-10 लाख करोड़ की फसलें आती हैं। उसमें से 4 से लेके 5 लाख करोड़ की फसलें ऑलरेडी सरकार, गेहूं है, धान है और शुगर केन में गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब प्राइस पर प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, तो वो भी एमएसपी पर हमारी एक तरीके से चली गई। बाकी बची 5-6 लाख करोड़ की फसलें जो प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। अभी वो औसतन जो हमने कैलकुलेट किया है, लॉन्ग टर्म एवरेज उसका 25% के आसपास एमएसपी से नीचे प्राइस पे वो लगभग खरीदता है। वो 20-25% का फिगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आएगा, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बोझ नहीं आना है, सरकार के ऊपर बिल्कुल नहीं आना है। और जो लूट हमारी प्राइवेट सेक्टर 1-1.5 लाख करोड़ की कर रहा था वो खत्म हो जाएगी। ये हमारी सिंपल मांग और इकोनॉमिक्स है जी। Okay. We are also now joined by Yashwant Deshmukh, the founder director of Voter, who has written a very provocative article. Provocative in the sense that it forces us to ask some very hard questions regarding who really feeds India. Yashwant, I'll come to you, but I want to quickly go to Sanjeeb on the point of the central issue which has been playing out since late on Sunday. The farmers have rejected the formula
the offering that the government has given, and we still don't have any clarity on whether there will be some sort of breakthrough. I don't know whether that will happen, but what's your own sense, Sanjeeb? Look, my sense is that compared to what was the situation last time, this time there is some acceptability of the fact from the government side that there is a problem. And the problem lies on, I am not saying very authoritatively because I might not have got very sources, very strong this thing, but whatever sense I've got from talking to people is that there is an acceptability of the fact that there is a problem and they might look to address it. Now, while addressing it, obviously, there will be certain considerations, the fiscal consideration, the logistical considerations, and also they might look at some kind of midway between what the demand is and what at least they can offer. So what was said that day is not very clear actually what the government is proposed, because the one section of the reportage or one section of what the statements have come out, and we have tried to cross-check with the government, is that they are proposing that the 5 crops will be bought under a contractual agreement, provided you diversify from wheat and rice. Now, that is a very difficult proposition to implement on ground because, and they're saying they have a website where they will create a portal where you put your link your crops. They already have something going on. Few months back, there was a portal launched by the Home Minister called Easynomics, where you can register yourself. But that is very confusing to me because if you diversify from one crop to another, how will you track that? And in a vast country like India, where is the government's machinery to track that? So that is a slightly confusing proposition, but the proposal is also not very crystal clear. My only argument or only grudge with the government side is, the one big grudge apart from the others, is that you come out with a very concrete set of proposals. You don't come out with such ideas that this is a path-breaking thing and then we'll work out and it doesn't work like that. If you have something in mind, if you have something which can be implemented, why don't come out on black and white and discuss with the farmer groups? That way the transparency is there. That's an important point. And Yashwant, I want to bring in the point that you have made, because Sanjeev also mentioned crop diversification away from rice and wheat. And viewers, the central part of what Yashwant has written along with a colleague, we'll try and bring that up on the screen. But very clearly, rice and wheat, Punjab, the question that he has asked is, are we really dependent on Punjab so much? Does Punjab really feed India? And the numbers that he has shared on your screen: wheat, 3rd largest producer; rice, 3rd largest producer. And this might surprise you because the percentages are also very interesting. Horticulture, Punjab is not in the top 6. Milk, it is not in the top 5. And also for eggs. And Yashwant, I want to come to you on this. It clearly therefore seems, given the market share that Punjab has in these crucial staples, is this really some other problem, socio-economic distress, that is also seen in the amount of migration that we are seeing, kabutarbaji from Punjab, that is behind this current agitation? Because it doesn't seem to be resonating across other states as much as it was in the past. Yeah, absolutely. And Siddharth, the reason why it is happening is that you remember when the farm laws were being repealed at that point of time, we had very clearly done a survey across India, even among the farmers. Yes, the Punjab, Haryana, Western UP, this block of India, the richer side of the farmer, the richer spectrum of the farming circuit, they were against the laws, but in the rest of the India, the poorer side, the bottom of the pyramid, as far as the farming community is concerned, they were pretty much in favor of the laws. And it's not as a single block as if they are representing the entire farming, circle of India. No, it's not like that. Because there is a huge difference between the socio-economic situation of the farmers coming from the Punjab, Haryana, Western UP block with the rest of the India. Forget about rest of the India, even within the UP, like, Western UP and Eastern UP, they do not match in terms of what they are, So the thing which I tried to argue and look into the data that, okay, number one, with utmost respect of the Annadata thing,
that yes, in the 60s and 70s, when India was really going through a tough time as far as the food dependency on the imports were concerned. Yes, it was the same area which, by virtue of getting better irrigation infrastructure right from the starting, which by virtue of huge subsidy that was given on the fertilizer, they made us self-reliant as far as the grains and the food was concerned. With complete respect out of that fact, but the fact also is that rest of the India, slow and steady, did catch up with that thing, with the infrastructure, with the irrigation, with the fertilizer and everything. And now the so-called Bimaru state, which are supposed to be, even in the north-south divide kind of thing, even if you go take that into account, it is the so-called erstwhile Bimaru state which are the food basket of the India, which are producing the maximum, crop for India as far as the staple food and wheat and the paddy and rest of the things are concerned. And even in the other spring revolution, the so-called richer state, the richer farmers, their contribution is not the same. The name or the brand that is there does not really resonate with the actual output that they are doing. So, Yashwant, there is a clear decline in output which you have also shown, and we are taking your graphics, and it's a fact that is borne out by other data as well. So, then why are Punjab farmers agitating? Is it for rice? 99% is already procured by under MSP, like you have pointed out. Wheat, an overwhelming majority of that. So is this indication of something else subterranean which the farmers sometimes end up expressing, including a claim saying that Modi ka graph Ram Mandir ke baad bahut upar ho gaya, usko down karna hai, or the other elements that we have seen sporadically in these protests? I think it goes way beyond politics and the farming thing. I think overall, the downslide of Punjab as a state in terms of production, not just agricultural, industrial and everything altogether, that has taken a nosedive. I wouldn't say that their output has decreased, but everybody has caught up and ये वो रेस है जिसमें पीछे से बहुत पीछे से आए और मैराथन में बहुत आगे निकल गए बाकी सारे स्टेट्स. आप कम दौड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, आप अच्छा दौड़ रहे हैं, आपसे बाकी लोग ज्यादा बेहतर दौड़ रहे हैं. Then the question comes, why only you? Are the farmers of other states getting the same MSP benefit as you are getting? No. And third most importantly thing, all these farmers, let's face it, there are two categories, land owning farmers and landless agricultural labor. The farming community of Punjab of 60s and 70s is no more the farming community as on today. They are more of a landowner farmers who are importing cheap labors from the other states, who are producing it. हमारे यूपी में बिहार में कहा जाता है बटाई पे दिया है. Basically, it is an industrial level batai which Punjab agricultural is witnessing right now. They need to diversify further in the cash crop. They need to find a solution. Right. Their crisis is different and the solution they are asking is different. It is not going to solve the problem, the core issues that Punjab economy is struggling right now. It is not solving. I'm not saying what they are asking. Even today, we just did the snap poll for India today. Huge majority of the Indians are sympathetic to the cause of the farmers. Absolutely. Yashwant, there is no question of non-negotiable areas for us. There is no question of being opposed to it, but the reality is that if we don't need so much rice and wheat, and if Indian consumers are shifting preferences in consumption, what is happening in Punjab? Pushpendra, I want you to answer this question. और इस सवाल को पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी भी देना चाहता हूं. सेमीकंडक्टर की बहुत बात होती है आजकल, but I don't know how many of our viewers right now know that the first and only semiconductor manufacturing plant in India was set up in Punjab.
and the work started, the ideation happened in 70s, and at that time Punjab virtually took that project out of Maharashtra by offering the entire land for 1 rupee. That was how progressive this state was. Some of the best electronic companies of that era were set up in Mohali. Mohali was a very big industrial cluster even before Gurugram had started. But Pushpendra, leave that aside. The point is, हमें कितना गेहूं चावल चाहिए, उससे बाहर क्यों नहीं आना चाहता किसान? और जब सरकार कह रही है कि हम उसके लिए आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एक अश्योरेंस देंगे, तो फार्मर इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता? पुष्पेंद्र जी। देखिए, मैं यशवंत जी का सम्मान करता हूं और उनकी सारी बात मैं सुन रहा था। एक बात तो ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी की जो मांग हो रही है, उसमें पंजाब और हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के किसानों को गेहूं, धान और गन्ने के रूप में वो ऑलरेडी मिल रही है डिफैक्टो। तो ये लड़ाई वास्तव में उस बिहार के किसान के लिए है जो अपना 2000 रुपए, 2100 रुपए का मक्का या 2200 रुपए की धान को जो है 1000 रुपए में बेचता है। अगर एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी तो उन लोगों को फायदा होगा जो बिहार के, उड़ीसा के और बाकी इस तरह के स्टेट्स हैं जहां पर एमएसपी उपलब्ध नहीं हो पाता। पहली बात, एक सर्वे मेरे निवेदन पर, सही क्वेश्चन भी, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार रेस्पॉन्स आता है, इतना सर्वे का सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। आप ये पूछ लें कि भाई बिहार के किसानों, आपको एमएसपी पिछली बार ये थी और कितनी मिली? क्या आप चाहेंगे कि सरकार आपको 2200 रुपए दे दे? अगर उसका जवाब एक किसान भी ना में दे दे तो ये सारा आंदोलन बेईमानी है। और ये जो कहा जा रहा है कि केवल पंजाब के किसान चाहते हैं, पंजाब के किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। पुष्पेंद्र जी, उसमें पुष्पेंद्र जी कोई भी प्रोड्यूसर, पुष्पेंद्र जी कोई भी प्रोड्यूसर इस देश में कोई भी सामग्री, वेदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और फार्मिंग प्रोडक्ट, वो तो कहेगा ना कि मुझे अश्योर्ड हो, बट बिजनेस तो ऐसे हो ही नहीं सकता। आप हो सकता, बता रहा हूं मैं। होता क्या है कि जब देश में भुखमरी फैलती है तो उस वक्त किसान याद आते हैं। जब देश के ऊपर युद्ध होता है तो सिपाही याद आता है, किसान जवान याद आता है। उसके बाद तो ऐसे लोग अभी मिल जाते हैं हमें आर्गुमेंट करने के। 71 से लेकर अभी तक लड़ाई नहीं हुई ढंग से कोई, इनको पेंशन देने की, इनको मेंटेन करने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जब युद्ध होता है या भुखमरी फैलती है, 60s का जो दशक था वो क्या था वो सब पता है। आज भी हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैन हमने किया हुआ है गेहूं के ऊपर। हमारा बाहर 40, 50, 60 रुपए में अगर बिक सकता है तो यहाँ पर सस्ता खिलाने के चक्कर में उसको बैन कर दिया जाता है। और तीसरी चीज, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात यशवंत जी ने कही, मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजर या जो भी इनपुट सब्सिडी है वो किसान की सब्सिडी नहीं है, वो कंज्यूमर सब्सिडी है, इन दी गार्ब ऑफ फार्मर सब्सिडी। क्योंकि उसको सब्सिडाइज्ड रेट को कैलकुलेशन में लिया जाता है और फिर उसका जो है A2FL या C2 प्लस 50% जो भी देने की बात है। तो यानी कि 1000 रुपए का कट्टा आ रहा है अगर, और मुझे 500 का दिया जा रहा है, तो 1000 रुपए का कैलकुलेशन में नहीं जाएगा, उसके हिसाब से मुझे एमएसपी नहीं मिलेगी, मुझे 500 रुपए के हिसाब से मिलेगी। तो वास्तव में वो मेरा घाटा है। इस विषय में एक आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा था। अब एमएसपी की बात पर भी अगर कोई विस्तार से देखना समझना चाहे तो ये जो है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम गेन, मिनिमम सपोर्ट और मैक्सिमम गेन, ये आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था और 31 दिसंबर 2021 को इसका फ्रेश वर्जन मैंने आज ही सबमिट किया है। एक आध दिन में इंडियन एक्सप्रेस में छपेगा वो जी। हमारे देश में जो मैंने पहले कैलकुलेशन बताई, शायद यशवंत जी उस टाइम उस प्रोग्राम में नहीं थे, हम जो है केवल 1.5-2 लाख करोड़ की जो लूट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है उसके ऊपर एक इंश्योरेंस चाहते हैं ना। तो इसमें कोई बजट की पुष्पेंद्र जी एक मिनट, यहाँ पे मैं आपकी बात, देखिए आप फार्मर डिस्ट्रेस में हैं, फार्मर सुसाइड्स हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसमें एक बात और अपनी तरफ से जोड़ता हूं कि कोई कार बनाने की फैक्ट्री हो या कोई और चीज हो, उसके पास इतनी प्रोडक्शन की वॉलेटिलिटी और इनपुट कॉस्ट की वॉलेटिलिटी नहीं है जितना किसान को होता है, क्योंकि किसान को मार लग सकती है बिजली की, डीजल की, प्राइस की, इसलिए सब्सिडीज भी मिलती हैं, डिलेज होती हैं, दाम बढ़ते हैं और मौसम भी पलटता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर से इसका कंपैरिजन सही नहीं है। बट आप जब ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लूट रहा है, ये तो बिल्कुल एक फंडामेंटली, मैं कहूंगा कि बड़ी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप आपने बात कर दी ना। प्राइवेट सेक्टर को क्यों गाली दे? नहीं, अभी मैंने आपसे कहा कि जितनी भी इनपुट सब्सिडीज हैं, जिस चीज को मैं डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता, अगर मैं पानी नीचे से निकाल रहा हूं सस्ता, तो वो सस्ते पानी के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट होकर के और टेबल पे पहुंचती है कंज्यूमर के।
वो सस्ता फर्टिलाइजर अगर आप मुझे 300 रुपए में यूरिया का कट्टा दे रहे हैं, तो आप उसका एक्चुअल रेट 3000 मेरी कैलकुलेशन में नहीं लगाते, आप 300 रुपए लगाते हैं, उसके हिसाब से मुझे पैसा मिलता है गेहूं का या धान का, तो वो पैसा घूम के जाता है कंज्यूमर की जेब में। तो ये फर्टिलाइजर ओके संजीव की भी बात सुन लेते हैं। नहीं Sanjeeb, respond to this point where Pushpendra says that it's just 2 lakh crore which is at the heart of the issue, and that is what the government, the center, and ultimately the taxpayers have to bear as an additional burden, and given the size of the economy, let us go along with it. That is what Pushpendra seems to suggest. Sanjeev, do you agree with this? So the calculation is based, yeah, I think he wants to have a point. इसमें संजीव भाई मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, टैक्स पेयर को कुछ नहीं देना है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो सरकार खरीदे, बाकी प्राइवेट सेक्टर जो हमारा एमएसपी पर नहीं खरीद रहा है उसको खरीदना अपनी जेब से, टैक्स पेयर को नहीं देना है, सरकार को नहीं देना है। और दूसरी बात जो मैंने कही इनपुट सब्सिडीज की, उसके बारे में संजीव भाई क्लैरिफाई कर देंगे। देखिए दो चीजें इसमें, एक तो प्राइवेट सेक्टर को देना है डेफिनेटली, अगर आप कोई तो देगा ये पैसा ना, 1.5 लाख करोड़, या तो आप सरकारी से खरीदवा लीजिए या प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। मेरा इसमें कहना यह है कि प्राइवेट सेक्टर आपका 1.5 लाख करोड़ का बोझ क्यों बियर करे। अच्छा चलिए प्राइवेट सेक्टर को मैं मान भी लेता हूँ बियर कर लेगा, चलो उसको आपने डंडा किया, एक्ट बनाया, जेल में डाल दिया। आज तक इस देश में कितने एग्जाम्पल्स हुए हैं जहां पे आपने ये एमएसपी सिस्टम या फिक्स्ड प्राइसिंग सिस्टम लागू किया है? क्या आपके पास कोई मॉडल है? हाँ मॉडल है। कौन सा मॉडल है? महाराष्ट्र वाला मॉडल है। महाराष्ट्र मॉडल में क्या हुआ, जैसे ही आपने तुअर का प्राइस फिक्स किया, किसान तो दूर की बात है, व्यापारी वहां से भागा। व्यापारियों ने क्या कहा, कर सरकार पे बोला कि हम इस दाम पे नहीं खरीद सकते क्योंकि तूर की जो क्वालिटी हम चाहते हैं वो ये क्वालिटी हमको प्रोवाइड नहीं करती। ये जो दाम आपने फिक्स किया है ये हायर लेवल ऑफ क्वालिटी के लिए है। तो दूसरा क्या हुआ, जो खराब वाला क्वालिटी माल था वो किसानों ने या किसी ने भी कहिए व्यापारियों ने खुद ही ने अपने मंद करके आपको हाई रेट में बेच दिया। कहने का मतलब ये है कि अब दूसरा एग्जांपल पे आते हैं। आंध्र प्रदेश में आपने एक्ट लाए, एक्ट आपने कैबिनेट से पास करवा दिया, आंध्र प्रदेश में एक्ट आने वाला था, एक्ट कहीं आ ही नहीं पाया क्योंकि एक्ट आगे चला ही नहीं। मेरा ये कहने का मतलब ये कि आज तक इस देश में जितने भी इस तरह की, एक आर्केनॉट का भी एग्जांपल है जो कर्नाटक में आई थिंक गोवा में कुछ दिनों के लिए चालू किया गया था, वो भी फेल हो गया था। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मॉडल है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का ऑन एमएसपी, हैविंग अ फिक्स्ड एमएसपी, ये कहीं भी किसी भी पायलट प्रोजेक्ट में भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हाँ, ये आप मेरे से आर्गुमेंट कर सकते हैं कि क्या डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, भावांतर सक्सेसफुल हुआ मध्य प्रदेश में? बिल्कुल नहीं सक्सेसफुल हुआ, भावांतर भी फेल्ड रहा। भावांतर में व्यापारियों ने ऐसा सिस्टम को गेम किया कि जो सोयाबीन का रेट 3000 था वो 2600 में उतर गया, क्योंकि जो डिफरेंशियल किसान व्यापारी ने बोला कि जाके जो पैसा है वो तुम खरीद लो, ले लो सरकार से, रजिस्ट्रेशन कराओ। भर के लोगों ने, खेत के लोगों ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जम के दांगेबाजी हुई इसमें क्योंकि व्यापारियों ने उसका system is flawed in that sense? No, भावांतर एज ए कॉन्सेप्ट खराब नहीं था, लेकिन भावांतर की इंप्लीमेंटेशन में ही प्रॉब्लम रह गई। आप मुझे एक चीज बताइए, भावांतर का एक वर्षन हरियाणा में चलता है, भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा सरकार सूरजमुखी के लिए हर साल देती है, वो तो फेल नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल हर साल बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। सूरजमुखी बेचता है किसान, जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है वो देती है हरियाणा सरकार। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो अभी तक जो मॉडल्स बने हुए थे उसमें सक्सेसफुल मॉडल कौन सा रहा? सक्सेसफुल मॉडल वो रहा जिसमें आपने एक डिफरेंशियल प्राइसिंग पेमेंट की सिस्टम निकाली। अब ये कह सकते हो आप कि भाई ये तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या अवेलेबल सिस्टम, हम उसी में तो बात करेंगे ना। अब दूसरी बात आप करो 1,75,000, मैं कहता हूं 1,75,000 नहीं, आप इसको डिफरेंशियल प्राइस में हर साल इसको रखिए, उसके साथ एक इन्फ्लेशन पेमेंट का सिस्टम रखिए कि जैसे ही किसी चीज का दाम नीचे जाता है, अगर वो एमएसपी से नीचे गई, उसकी आपके पास पोर्टल है, आपके पास आज देश में आज हर किसान का आपके सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है, आप उस पर रखिए कि आपने जो अपना पैसा बेचा। But Sanjeev, I want to interrupt here, and what will this mean for inflation? Because you know everybody is a consumer. If it is fiscally tenable, my question is if it is fiscally tenable, it won't have an inflationary much of an impact. Okay. So जो अभी या लीगल गारंटी जो करंट मांग है उसमें जो मैंने बताया उसमें कोई आपत्ति आपको है? फ्लोर प्राइस हम ये नहीं कह रहे हैं, फ्लोर प्राइस लगाने के मैं भी 2-3 उदाहरण बता देता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है,
इसी देश में गैस का सिलेंडर कमर्शियल और जो है वही कमोडिटी जो है डोमेस्टिक अलग अलग रेट पे बिकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी देश में एक्स मिल गेट प्राइस जो है निश्चित है शुगर का, कि शुगर इससे नीचे नहीं बिकेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी देश में जो टेलीकॉम वाली कंपनियां हैं, मेरे पास ये कटिंग है 11 अगस्त 2021 की इंडियन एक्सप्रेस में छपी, इन्होंने अपील की थी कि हम लॉस में जा रहे हैं, ये देखिए हम लॉस में जा रहे हैं तो हमें एक फ्लोर प्राइस दिया जाए। ये सरकार ने उस टाइम कंसिडर किया। स्टैंप ड्यूटी, सुनिए, शुगर के एग्जांपल में आपको शुगर के एग्जांपल में पुष्पेंद्र जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा सिस्टम सरकारी कंट्रोल्ड है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि बिजली के प्राइस हो, जमीनों के सेक्टर रेट हो, ये सारे के सारे फ्लोर प्राइस जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। अगर मैं कोई जमीन जो है यशवंत जी से खरीदना चाहूं तो सरकार के रेट पर मुझे खरीदनी पड़ेगी, चाहे हम दोनों का सौदा कुछ भी हो। तो ये सारी चीजें, फ्लोर प्राइस का कॉन्सेप्ट फीजिबल नहीं है या इकोनॉमिकल सिद्धांत से बाहर है या कहीं नहीं अप्लाई हुआ है। Okay, let's get Yashwant in. Yashwant wanted to come in. Yashwant, please, you wanted to come in. Go ahead. I just wanted to say कि भाई साहब एक्चुअली मैं MSP वाले व्यक्तिगत रूप से आप मुझे यशवंत देशमुख को पूछेंगे या किसी भी देश के नागरिक को पूछेंगे तो किसान के भले के लिए उसको मिनिमम गारंटीड एक प्रोड्यूस का प्राइस मिले, ये कौन मना करेगा? इस देश में कोई भी सुधी नागरिक किसी भी पॉलिटिकल साइड का उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उसकी जो ब्रॉडर, जैसे मुझे जो पूरी दिक्कत मैं आज जब ये पीस सिद्धार्थ लिख रहा था, वेयर आई गॉट स्ट्रक वाज दैट ऑलमोस्ट virtually everything in terms of paddy and wheat that Punjab produces gets procured by MSP. Precisely. Does the poor farmer of Odisha get the same kind of treatment? No. So आप अगर X amount, Okay, we seem to have a poor connection with Yashwant, but इनकी बात मैं समझ गया। ये कह रहे हैं कि भाई उनका पूरा खरीदा जा रहा है और उड़ीसा और उसका नहीं खरीदा जा रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो है जब फेयर प्राइस होगा और एक प्राइस होगा तो Yashwant is back. Pushpendra, let Yashwant make complete his point. मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि जैसे क्या ये संभव है कि जितना भी पैदा हो सब कुछ सरकार खरीद ले, सरकार खरीदने की गारंटी दे? मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, सरकार अपने उसमें बजट में एलोकेट करिए, सपोज मुझे कोई एक्स अमाउंट एलोकेट करती है कि हम ये प्रोक्योरमेंट के ऊपर इतना बजट रखते हैं। मेरा दूसरा उसमें एक इनपुट या समाधान नहीं, क्वेश्चन ज्यादा है, क्या पर्टिकुलर क्रॉप को पूरे देश में जिस पैमाने पे, राज्य छोड़िए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रैंक है, उसी प्रपोर्शन में वो बजट का एलोकेशन हो? क्या ये मान्य होगा? क्या ये अमीर राज्यों के अमीर किसानों को यह मान्य होगा? आज अगर उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या राजस्थान या बिहार या मध्य प्रदेश किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो ज्यादा पैदा कर रहा है, पैदावार के हिसाब से उसका शेयर, उसका राइट ज्यादा होना चाहिए उस प्रोक्योरमेंट के बजट में, क्या यह मान्य होगा? क्योंकि बजट एंडलेस नहीं है सरकार के पास में, बजट तो फिक्स होगा। No, Yashwant, this point that you make is important, Yashwant, because there is a finance commission for determining the tax devolution. You are almost raising a point that will there be an agriculture commission which will decide this, and this will distort market economics. Sanjeeb, just let's come back to the core of the policy challenge here, and you made this point earlier. You said that even the set of proposals that have been discussed now by the government don't seem to be fully crystallized as a viable policy option. Why do you think this is so? Because it's also a fact that the government over the last 10 years has continued to support the overall farming sector through multiple subsidies, through various other initiatives, and the government and people that we speak to in the government say that, well, you know, we are doing this to the best of our sincerity, but we cannot guarantee to acquire products which will be fiscally a huge burden for the country. That's what the government says, Sanjeeb. So why they are, to your first question, why they're coming out with another proposal to address this issue? Obviously there's political elections, that's set aside, but also the core of the problem remains that the incomes aren't growing.
let's accept it. If you see the last available data, which is the situational assessment survey of the 2018-19 done by the NSSO, and even the NAFIS survey, which was done by NABARD, it does show that the income from agriculture isn't growing. Your bulk of your income for a rural household today is not cropping, it is wages. Your proportion of income from cropping in a rural household is going down. From 42%, it has come down to 37%, while the share of wages in that income is rising, which also means that income from land is shrinking and income from other sources in his overall income is rising. So the income from land is going down. There needs to be some stagnation, some stoppage to that, which is why because income from land is flowing also because the yields are rising. You are not putting into effort to increase those yields because your land sizes are going down. That doesn't mean the rate of growth, slowdown of a land size is less, but it is shrinking. So your yields needs to rise. From the same land, you need to get more productivity. That isn't happening because your investment in seeds, your investment in regulations, your regulatory the things for seeds is very, very, very slack, and it hasn't moved in this country. Your seeds do get produced in an institute called ICAR, which me and Pushpendra go very frequently, but it doesn't go to the farmer. There is and Sanjeev, a quick one, if you can respond. We must also tell our viewers that despite all of this and despite years of trying to increase dal production in India, we still import so much dal from all over the place, include Myanmar. Imagine India importing dal from Myanmar. Yeah. So there is a data which came out, which we all reported. So in last 3 years, from 1,21,000 crore of edible oils, we are in the last 22-23, we imported 1,60,000 crore of edible oils, and 80-85% is palm oil, which gets from Punjab, from Malaysia, Indonesia. Similarly, in case of pulses, you're importing all. पुष्पेंद्र जी, किसान इन चीजों की तरफ क्यों नहीं देख रहा है? इतना पैसा बाहर जा रहा है, अपने देश में शुरुआत होके कम से कम दाल के लिए, तिलहन के लिए बाहर से क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है? दूध में हम इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, सबसे नंबर 1 है दुनिया में, पर हम केवल चावल, गेहूं, गन्ना इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आसान है, पानी खुला मिल रहा है, बिजली फ्री है, लगाते जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो जो है, अभी संजीव जी से मैं दोबारा पूछ रहा हूं, पहले उसका जवाब दे दें। इनपुट सब्सिडीज, आर दे फार्मर सब्सिडी और दे आर कंज्यूमर सब्सिडीज इन द गार्ब ऑफ फार्मर सब्सिडी? इसका जवाब क्योंकि जानकार आदमी देंगे, पहले इसका बताओ। देखिए, इनपुट सब्सिडी अगर आप उसको मार्केट ड्रिवन कर दीजिए तो मेरा कंज्यूमर सब्सिडी है। आप उसको मार्केट ड्रिवन अभी क्या स्टेटस है? अभी तो वो कंज्यूमर सब्सिडी है, क्योंकि आप उसको नीचे करके रखते हो, आप उसको सुनिए, बस ये देशमुख जी, आज के बाद ये मत कहना कि ये फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सब्सिडी जो है किसान के पास जा रही है। नहीं, पुष्पेंद्र जी, सारी की सारी जा रही है कंज्यूमर के पास। मेरे को देश में नैरेटिव जो बनाया हुआ है, नहीं, लेट यशवंत आल्सो कम इन। किसान खाता है नहीं, किसान की दुर्भाग्य से आपने मेरी बात को अन्यथा लिया। और चीजों नहीं, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, यशवंत को भी बोल लेने दीजिए। लेट यशवंत आल्सो कंप्लीट हिज पॉइंट। पुष्पेंद्र जी, आपने मेरी बात को अन्यथा लिया। मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं था। और सेक्टोरल सब्सिडीज जो होती हैं वो कंज्यूमर ड्रिवन इन एनी केस होंगी, क्योंकि अगर आपको उस तरीके से वो सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी तो जिस कीमत पे आप प्रोड्यूस पैदा करेंगे उस कीमत पे खरीदने के लिए आपके बेचेंगे किसको? अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज है, किसी भी प्रोडक्ट की, मैं केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, कंज्यूमर ड्रिवन सब्सिडीज जब दी जाती हैं वो दी ही इसलिए जाती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव कर सके, उसकी सस्टेनेबिलिटी हो, लोग खरीदने की हैसियत तो रखें। अगर वो सब्सिडीज ही नहीं होंगी तो आप उगा लीजिए, अपने कीमत पे आप बेचिए, लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो ये तो फेयर पॉइंट यशवंत, दैट्स अ फेयर पॉइंट। अलग सेक्टर्स में भाई साहब तमाम तरीके की सब्सिडीज दी जाती हैं उसको सस्टेनेबल करने के लिए। मैं आपको और पॉइंट आउट करूंगा कि ये अर्बन कंज्यूमर्स जो बैठे
जो ये नैरेटिव बना के रखते हैं कि सस्ता खाद, सस्ता बीज, अरे वो आप ही को लाभ दे रहा है। 22 रुपए किलो का नहीं मिलेगा, फिर 3 जो रुपए किलो का अर्बन मिलेगा आटा। कंज्यूमर है भाई साहब, वही तो पैसे दे के खरीद रहा है। जो जिसको आप कंज्यूमर कह रहे हैं, पैसा दे के तो वही खरीद रहा है। बॉटम ऑफ द पिरामिड को तो पैसा दे के राशन नहीं दे पड़ रहा है ना। आपकी इकोनॉमी वही मिडिल क्लास है जो पैसा दे के खरीद रहा है, वही मिडिल क्लास है जो टैक्स भी भर रहा है। देखिए वो डिबेट अलग चली जाएगी। मैं जैसा Absolutely, Yashwant, Pushpendra, I'm sorry, I'm stepping in because we are completely out of time. Both of you make absolutely valid arguments, and Yashwant, as you say, perhaps that is a different debate, because viewers, it's very clear. We've been now debating this for almost 2 weeks, and it's very clear that while the farmers and the government are trying to achieve some sort of consensus on this show, at least one small point. Yes, Yes, Sanjeeb. In the debate on subsidies. So if you are, my only thing is that just like in any other case, you are giving a subsidy to push a product. So in case of agriculture, you're obviously giving a subsidy to push that product because you want the consumers to subside. So if tomorrow you remove that urea subsidy and make it urea, I asked Pushpendra in that, I'm willing to forward that, but will the farmer pay 3,000 rupees a bag for the urea tomorrow? No, he won't. He will come to the street to make it for 255 rupees for 45 kg bag. That is the problem. It will not be sustainable because after paying 3,000 rupees for the urea, the product, ultimate price of the product will be sustainable before the consumer. Okay, Sanjeev, you also ask a very valid question, and we'll perhaps carry this debate on because I'm running out of time. I'm having to step in, although the debate is fascinating. And just to add, and I know Pushpendra will want me to say this, it's not just India that provides farming subsidy. The European Union provides per capita, and Sanjeev can correct me if I'm wrong, perhaps the highest amount of subsidies as far as its farming sector is concerned. Yet every now and then you see scenes of their farmers protesting in very innovative ways. I hope that day doesn't come as far as India is concerned. सिद्धार्थ जी, केवल एक सब्सिडी है आज की तारीख में, ये जो 6,000 रुपए पीएम किसान के दिए जा रहे हैं, केवल ये सब्सिडी काउंट होगी, बाकी कोई सब्सिडी नहीं है, सारा कंज्यूमर के लिए है। Absolutely, because inflation is something that has direct political consequences, and this is not just in India. I can also share with our viewers the Inflation Control Act, a most recent development in the United States, where billions of dollars have been thrown at keeping consumer prices low. But there's so much to debate on this, but viewers, at least I have not made any headway today in my quest for a workable solution, and this debate has gone on for decades. I hope for the sake of our farmers and for our country's economy, this debate gets settled. The government has offered something, the farmers seem to be listening. Hopefully there will be some agreement and light at the end of the tunnel. Yashwant Deshmukh, Sanjeeb Mukherjee and Pushpendra Singh, as always, thank you very much for your time and patience. You the viewer as well. We'll be back with more. Until then, goodbye. Darwin Platform Group of Companies is one of the fastest growing diversified Indian conglomerates with global footprints. It is setting up offices globally and tying up with companies across the globe for multiple sectors. The company has ventured into real estate and construction, stockbroking and finance, arms and ammunition, mining, airlines and many other sectors. How do you react to this news that Whirlpool's parent would be selling a 24% holding, bringing it down to 51% in this